तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर भैया। और आज की इस वीडियो में, डे 5 की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और इस वीडियो से हम एसटीएस का यूज करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में लाइक स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशंस होगी वो हम एसटीएस के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे। सो ये बेटर होगा कि आप पहले से ही एसटीएस को यूज करना सीख जाएं। इट इट इज लाइक ए नॉर्मल आईडी जो आप यूज करेंगे। लाइक एसटीएस का मैं एक वीडियो रिलीज कर दूंगा जिसमें आप डाउनलोड कर रहे होंगे। लाइक हाउ वीडियो रिलीज कर दूंगा, लाइक हाउ टू डाउनलोड एसटीएस एंड set paths and all these things. So without any further delay, let's get started. So guys, as you can see, I'm creating a project here Java and in src. So like आपको ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है? फर्स्ट यू ओपन द एसटीएस एंड गो टू द न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जावा, लाइक जावा जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, JAV जावा। और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। Okay, so we can go in the STS SRC folder, and here we can create a package. We can create like and like package क्या होता है? Package is the combination of folders, जिसे हम बोल सकते हैं। So यहाँ पे like multiple फाइल्स होंगी पैकेज के अंदर, जो कि एक सिमिलर लाइक सिमिलर फोल्डर पे बेस होगी, सिमिलर टॉपिक पे। लाइक मैं एक फोल्डर बनाता हूँ com.coder। दिस इज द फोल्डर। सॉरी रीनेम करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, com.d5 करते हैं इसे रीनेम, एंड इट्स नेम इज com.d5 d5। okay, then our folder is created successfully. So in this folder we are creating a class. So today we are talking about the conditional statement. So I am giving it a name like conditional statement, condition conditional statements. Okay, so this is our Java class conditional statements. So as you can see, like our class is created successfully. थोड़ा इसे और zoom कर देता हूँ. Okay, then it will be good to see. Okay, so as you can see, this is our class created successfully, and in this class we gonna code like I'm typing a main function here, main. Okay, so okay, no problem. I gonna write manually public static void main string and args. Okay, then spelling is correct, string args. So then we are talking about which so today's topic is conditional statements. So conditional statements क्या होती है? So सबसे पहले आपको लेट्स से कोई कंडीशन है, लाइक वोटर की कंडीशन ले सकते हैं अपन। लाइक दोज स्टूडेंट्स हु आर ग्रेटर देन 18, एज 18, हु आर एलिजिबल फॉर वोट। सो यहाँ पे एक वोटर्स एलिजिबिलिटी ले लेते हैं। ओके, देन वोटर ELI एलिजिबिलिटी कंडीशन हम इसे लेते हैं। सो लाइक हमारे पास काफी सारे सिंबल्स होते हैं, लाइक ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कॉमा, लेस देन इक्वल्स टू। ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सिंबल्स होते हैं। तो हम इसे सिंबल्स को कैसे यूज करेंगे? लाइक यहाँ पे आती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अगर मैं बोलूँ कि अगर लाइक हमारे पास एक एज है, एज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हो सकती है? लाइक मैंने बोला 13। अब एज यू ऑल नो, द पर्सन हुज एज इज 13 who is eligible for vote or not. Like I'm giving it a like if statement. If age is get if age is greater than 18, then print eligible. Okay, then print eligible. Else, okay, greater than 18 is also an eligible. Else control Z, not eligible. Okay, then I will do this.
age of a person is 13, and I will write a like conditional statements, like if the age of a person is greater than 18, then print like eligible, he's eligible, and else if the person is not eligible. So if I will run, go to right click on this and go to the run as, and run as a Java application. Click on the Java application. As you can see, uh, our as you can see on the console, not eligible. So not eligible because the age of person is 13. If I am putting it 18 and again run it, I am simply click on the rerun button. Okay, then as you can see, eligible. The person is eligible because we are providing age is 18. So if age is greater than and equals to 18, then prints eligible. So these are two types of statements, if and else, and one another statements is also come between if and else, that is else if. So like I'm talking about, like I'm typing is here a question like if, take an example, like what example I take. Okay, so uh, okay, so I will take a example of marathon, like if the children is if the children is in less than or equal, like if the children's age is less than 13, if the if the person age is less than 13, then it is not eligible for bike, sorry, scooty. And if if the if the person is uh, greater than or equals to 13 but less than 18, is eligible for like bike, or and like third condition is, इसको हटाते हैं, third condition is if the person age is greater than or equal to, greater than or equals to 18, then he is eligible for bike. Then he or she is eligible for bike, eligible for car, sorry, for car. Then this is the question. So how to implement this question, like if the person is 18, like if मैंने यहाँ पे टाइप किया like 13 age, so first statement, if the person age is less than 13, or this is not eligible for scooty, sorry, less than 13, that it is eligible for, he is eligible for scooty. Okay, so he is eligible for scooty. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर पर्सन की एज लेस देन इक्वल्स टू 13 है, तो ही इज एलिजिबल फॉर स्कूटी. Okay, else if, else if here is the, here the else if statement comes. So this out condition, middle condition, if the person is greater than or equals to 13, if the person is greater than or equals to 13, अगर person क्या है, person की age है greater than equals to 13, and और आ रहा है बीच में, so और age is less than 18. ओके, अगर एज इन दोनों के बीच में होती है तो पर्सन इज एलिजिबल फॉर बाइक, एलिजिबल फॉर बाइक. ओके, एंड रिमेनिंग जो बचा अपने पास, क्या बचा, 18 एज, सो यहाँ पे लिख देंगे अपन एलिजिबल फॉर कार, एलिजिबल फॉर कार. सो this is the way how that how we use these conditional statements. If I gonna run again this, then as you can see,
the person age is 13, and this satisfy this condition, age is less than 13, so the eligible for scooty is printed in our console. So this is the output. So I hope you understand these conditional statements. So now I am going I am going on my another topic, um, take a pause here. Okay, okay, so we are going to talk about now bitwise operators. We are going to talk in another video. So our next video is come to like tomorrow or day after tomorrow. I will try my best to upload as soon as possible, and I hope you like this video and hit a subscribe and like button also. So thanks for watching, and bye bye.